बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गाजिया। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत मुस्तफ़ीद होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में और इसकी पूरी डिटेल को स्टडी करेंगे। टाइमलाइन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सेल के बारे में मैंने पहले ही पिछली वीडियो में बता दिया कि सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। तो इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, तो उसने ये स्टडी किया माइक्रोस्कोप के नीचे के उसने ही एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑफ ओक ट्री अंडर माइक्रोस्कोप, और ही डिस्क्राइब दैट द कॉर्क वाज मेड ऑफ मैनी लिटिल बॉक्सेस. When Hooke saw the stem and root of trees under his microscope, he found that these were also made of similar little boxes. Then he concluded that parts of plants were made of compartments. Hooke called them these compartments as celluli. ठीक है, उसने जो था इनको नाम दे दिया सेलुलाई का। सेकेंड साइंटिस्ट इज़ लेवन हुक, अ डच साइंटिस्ट। उसने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई जो कि उसकी रॉबर्ट हुक की माइक्रोस्कोप से 10 गुना ज़्यादा उसकी मैग्नीफिकेशन थी, और उसने ऑब्ज़र्व किया 1673 में। ही ऑब्ज़र्व लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर एंड कॉल्ड देम एनिमलक्यूल्स। उसने उनको पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया और उनको एनिमलक्यूल्स का नाम दे दिया। Hooke and Leeuwenhoek were the first who observed cells. Then Robert Brown. Later on, in 1831, a British botanist, Robert Brown, discovered nucleus in a cell. उसने बोला कि सेल के अंदर कुछ और भी मौजूद है, तो उसने उनको न्यूक्लियस का नाम दे दिया। Next one is Sheridan. In 1838, the German botanist Sheridan concluded that all plants were composed of cells. At this time, biologists began to organize information about cells. In the next year, the next scientist, the next German zoologist, Schwann, concluded the same thing for animals. And he also said that all animals are made up of cells. Like Sheridan, he said all animals are made up of cells. In next scientist is Virchow. In 1855, he said all cells come from other cells. ऐसा जो था रॉडल्फ विर्चू ने 1855 में कहा। नेक्स्ट वन था पास्चर these observations were combined to form a basic theory about cells. It is called the cell theory. तो पास्चर जो था उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया कि cells come from other cells। 1862 में उसने इसका प्रूफ दे दिया था। तो ये जो थी ये पूरी हिस्ट्री है, इनकी टाइमलाइन है, जिसमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक हैं, लेवन हुक हैं, रॉबर्ट ब्राउन है, शेल्डन है, शवान है, विर्चू है एंड लोइस पास्चर आ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो है इसमें आ जाता है। तो इस थ्योरी में उन्होंने जो थे 3 एसेंशियल पॉइंट्स निकाले थे, ठीक है। वो 3 पॉइंट्स जो हैं उनको सेल थ्योरी का नाम दिया जाता है। तो वो क्या है 3 पॉइंट्स, हम देखते हैं। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 1 और मोर सेल से कंपोज किए गए हैं, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज़ सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में बेसिक यूनिट क्या है, सेल। And the third one is cells come only from the division of existing cells. जो सेल हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से न्यू सेल जो हैं वजूद में आते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 जो है, all living organisms are composed of 1 or more cells. And the number 2, cells are the basic units of structure and functions in an organism. Cells are the basic units of structure and function in an organism.
and the last one and the third one is cells come only from the division of existing cells। जो सेल हैं वो पहले से मौजूद जो सेल हैं, जो न्यू सेल हैं, वो मतलब डिवीजन होती है सेल्स की और नए सेल वजूद में आते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें माइटोसिस, मियोसिस ये सारे आ जाएंगे ना, तो उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स थे, ये 3 मेजर पॉइंट्स थे, एसेंशियल पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। तो सेल थ्योरी में टोटल 7 साइंटिस्ट थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक, लेवनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, मतलब और भी होंगे एट द सेम टाइम। बहुत से साइंटिस्ट जो थे वो इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो जो मेन थे वो 7 हैं, जिसमें है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665 एंड 1673। लेवनहुक ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स इन वाटर एंड इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एंड 1838 शेल्डन सेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड इन 1839 शवान सेड that animals are made of cells, and in 1855 Virchow said that all cells come from other cells, and in 1862 the last scientist Pasteur proved that cells come from other cells। उसने Virchow की जो बात थी उसको एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव कर दिया था। तो देन दीज ऑब्जर्वेशन वर कंबाइंड टू फॉर्म अ बेसिक थ्योरी अबाउट सेल्स। तो इसको जो है वो सेल थ्योरी का नाम दे दिया। इट इज़ कॉल्ड सेल थ्योरी एंड इट हैज़ 3 एसेंशियल पॉइंट्स। वो जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more cells, and cells number 2, cells are the basic unit of structure and function in an organism, and the last one is cell only comes from the division of existing cells। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।